Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are studying properly and doing your revisions on a regular basis, and the most importantly, making your notes by watching the videos. Children, we are studying the chapter 8, Psychology and Life, where we have discussed about different branches of psychology. In that one, we have discussed about the environmental psychology. Then we have discussed about social psychology. Environmental and social. In social psychology, we are discussing about the topic poverty. Poverty के बारे में हमने discussion किया था. We discuss in the details about the poverty, like what is its meaning. So children, about the poverty we have discussed in detail, like its meaning, its causes, its consequences, and measures for poverty alleviation. ठीक है, तो this all we have discussed. Today, in the today's session, so children, in today's video, we are going to discuss about the aggression, violence and peace. So the topic of our today is aggression, violence and peace. This is our topic, aggression, violence and peace. So children, the most important part is we have discussed about, or you can say that we are discussing about the part of social psychology. Social psychology is that field of psychology which deal with the society, which linked the person with the other person. So ये सारी चीजें होती हैं. Now this is one thing. So children, what I am discussing with you, I am discussing that we are reading about the social psychology field. So it is a field which relate the people with the society. So obviously, as we have studied the term poverty, which is a problem which is a part of the society. It is a problem which is related to the society. Similarly, another psychological factor which is related to the society is aggression, violence and peace. This is also a term which is related to this field only. Okay? So, let's study about this one. इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में. ठीक है? So children, this topic found to be very interesting also. You are going to study about aggression. क्या होता है aggression? Violence क्या है? How the people in the same situation be aggressive, some will become violent, some will become very peaceful. So it is something, a very interesting topic, but yet it is a major problem in the society. See, this not only have a physical effect, same condition with the poverty, it also have a psychological effect. This is just the reaction of the psychological stress, which is a frustration. You have read about that frustration lead to aggression, and aggression may convert into a violence. See, these aggression and violence are among the major problem in today's society, and they cover a wide range of behavior. From ragging of newcomers in educational institutions through child abuse,
domestic violence, murder and rape, to riots and terrorist attack. These are some of the examples where you can see the aggression and violence. Children, aggression और violence का बहुत ही नेगेटिव और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है पर्सन के साइकोलॉजिकल वेलबींग पे. यस, सो हमें इसमें ये भी पढ़ना है कि हाउ वी कैन डिफाइन द एग्रेशन, हाउ वी कैन डिफाइन द वॉयलेंस. ठीक है, कैसे हम एग्रेशन को डिफाइन करेंगे, कैसे हम वॉयलेंस को डिफाइन करेंगे. साइकोलॉजिस्ट ने एग्रेशन का टर्म यूज किया है टू रिफर टू एनी बिहेवियर बाय वन पर्सन और पर्सन्स that is intended to cause harm to another person or persons. So aggression क्या है? ये intentional behavior है. It has been found that it is an aggression intentional harm, that is an aggression. It is a behavior which one person is intended to cause harm to another person. एक person दूसरे person को harm करता है intentionally. It can be demonstrated in actual action, या तो ये action में आएगा और through the use of harsh words or criticism, or even hostile feeling against other. So aggression can be seen to you in three forms: verbal, action, hostile feeling. फीलिंग्स में दिख सकता है आपको एग्रेशन, एक्शन में दिखता है which may convert into violence, and then verbal using the harsh words, criticism. Note it down this point, children. Forceful destructive behavior toward another person or object is described as violent. So violence क्या है? What is a violence? It is a forceful destructive behavior. Forceful destructive behavior. ये है violence. Forceful destructive behavior. Some of the psychologists distinguish aggression from violence by pointing out that aggressive behavior involves the intention to harm or injure another person, whereas violence may or may not involve such kind of intention. A very clear-cut difference between the aggression and violence is that aggression में person दूसरों को जान के harm करता है, intentionally harm करता है, but violence में ऐसा कुछ नहीं होता. वॉयलेंस में जान के वो उसको डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर नहीं करता. देयर आर सम ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से वो ऐसा हो जाता है. इट हैपन, द पर्सन बिकम इतना एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो कभी कभी वॉयलेंट हो जाता है, बट एग्रेसिव बिहेवियर इंटेंशनली होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल है, बर्निंग बसेस और अदर पब्लिक प्रॉपर्टी ड्यूरिंग अ राइड इज कॉल्ड वॉयलेंस एज वेल एज aggression. But suppose you see a person kicking a motorbike violently, his or her intention may be only to start the vehicle, and therefore this act will not be considered a case of aggression. You should understand the basic difference between each and everything. ठीक है, हमने कहा कि हम किसी को हार्म कर रहे हैं इंटेंशनली, वो एग्रेशन है, बट डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है. अगर कोई मोटर बाइक को स्टार्ट करने के लिए उसे हिट कर रहा है तो वो भी एक तरह से हार्म कर रहा है, इंटेंशनली कर रहा है, पर वो एग्रेशन नहीं है. ठीक है. On the other hand, the person may also perform the violent act in order to damage the vehicle because it belonged to a person he or she disliked. In this case, because harm was intended, the act would be called a case of aggression. अब कोई किसी से अगर जेलसी है या किसी को डिसलाइक करता है और इसीलिए उसके ऑब्जेक्ट्स को हार्म कर रहा है, तो ये क्या है? ये है एग्रेशन. इज इट क्लियर?
I hope children you understand about the aggression properly. Aggression के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि aggression क्या है, how it is differ from the violence, कैसे ये violence से differ है. So aggression हमने ये जाना कि aggression क्या है, when we intentionally harm to any object. Okay, aggression क्या है, when we intentionally harm to any object. So but इसमें भी there were so many situations, like if we are kicking our bike intentionally to start it, but that is not an aggression. Okay, and violence क्या है, violence is the destructive behavior toward other, that is a violence. So moving आगे बढ़ते हैं. Now this aggression is divided into two parts. Aggression और violence आपको अच्छे से समझ में आया बच्चों. Aggression is an intense harm to other and violence is a destructive behavior. This intense harm sometimes lead to the violence also. Okay. So basically it is clear, aggression and violence, and how aggression with the example of that bike example you will understand the difference also. Now aggression is divided into two parts, hostile aggression and instrumental aggression. One more thing I had described you children, that aggression can be shown in the three forms. It can be shown in the verbal form by using some harsh word, criticism, or it can be shown through action, which is a violence, and it can be shown through hostile feeling. अगर आप किसी के toward hostile feeling रख रहे हो, तो that is also a form of aggression. Usually aggression is divided into two parts, hostile and instrumental. Hostile and instrumental. Now what is this? In instrumental aggression, the act of aggression is meant to obtain a certain goal or object. For example, a bully slaps a new student in school so that he or she can snatch the newcomer chocolate as an expression of anger toward the target with the intention of harming him or her, even if the aggressor does not wish to obtain anything from the victim. For example, a criminal may beat up a person in the community for mentioning his name to the police. So you understand the difference between hostile and instrumental. Hostile में क्या होता है? You abuse the person, you show non-verbal expressions. Okay, so that is a hostile, means feeling रख रहे हैं, anger show कर रहे हैं, non-verbal gesture show कर रहे हैं in order to gain an object. ओके, बेसिकली इसमें गोल जो होता है ऑब्जेक्ट को लेना नहीं होता. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंटल एंड हॉस्टाइल एग्रेशन क्या है? जैसे इंस्ट्रूमेंटल में इज अ टाइप ऑफ एग्रेशन विच इज शोन टू ऑब्टेन एन ऑब्जेक्ट. कुछ चीज को लेने के लिए आप जब एग्रेशन शो करते हो तो दैट इज अ इंस्ट्रूमेंटल. बट बिना कोई चीज को लिए सिर्फ एग्रेसिव शो करते हो तो दैट इज अ हॉस्टाइल. So I hope children you understand the basic difference between an hostile and instrumental. Basically instrumental के साथ object add है, ठीक है, इसके साथ ऐसा नहीं है, ठीक है. Hostile में सिर्फ hostile aggression is an aggression which is shown an expression of anger toward the target with the intention of harming him or her, but does not wish to obtain anything from the victim. बट इट इज जस्ट अपोजिट टू द इंस्ट्रूमेंटल. इंस्ट्रूमेंटल में हमको वो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, बट द टू थिंग्स आर सेम इन बोथ ऑफ देम. हम इसमें भी करते हैं, हम इसमें भी हमारा इंटेंशन हार्म पहुंचाना होता है और इसमें भी हमारा इंटेंशन हार्म पहुंचाना होता है. बट इसमें हमें ऑब्जेक्ट लेना होता है, हमारा गोल होता है कि ऑब्जेक्ट को लेना. इसमें हमारा कोई ऐसा गोल नहीं होता. So the basic difference between these two we understood the topic also. Now after understanding the meaning and the types of aggression,
Let's move toward its causes. Aggression क्यों होता है? What are the causes? So one by one we will discuss the causes. Some of the social psychologists ने explore किए हैं कि what are the causes of aggression. So they come to some of the point. The first cause of aggression is found to be inborn tendency. ये देखा गया है कि ये भी inherited होता है. Inborn tendency. Aggression is also inherited children. Aggression भी inherited है, inborn tendency है. ठीक है, ये भी हमें हो सकता है एंसेस्टर से मिला, जैसे लाइक योर फादर इज हैविंग एन एट्रीब्यूट ऑफ एग्रेशन, सो मे बी सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स आर फाउंड इन यू ऑल्सो एज अ सन और एज अ डॉटर. So aggressiveness is an inborn tendency among human as it is in animal. Biologically, this inborn tendency may be meant for self-defense. Okay, एक तो ये इनहेरिटेड भी हो सकता है, दूसरा ये इनबॉर्न टेंडेंसी है, यानी एक नेचुरल टेंडेंसी है. एग्रेशन बीइंग एंगर, एंगर एक इमोशन है एंड इट इज इमोशन विच इज नेचुरली प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बीइंग एज इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एनिमल्स. सो बेसिकली इसे माना गया है कि इट इज प्रेजेंट इन द पर्सन फॉर देयर सेल्फ डिफेंस. अपने डिफेंस के लिए हम लोग ये यूज करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट कॉज ऑफ एग्रेशन इज physiological mechanism. Physiological mechanism. Physiological mechanism से क्या समझ में आ रहा है बच्चों? Aggression could also be indirectly triggered by physiological mechanism, especially by the activation of certain parts of the brain that play a role in emotional experience. Physiological mechanism का मतलब है it is somewhere related to the biological aspect, physical aspect. ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन आपने पढ़ी है, तो ब्रेन का वो हिस्सा जो कि इस वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी वजह से भी पर्सन को एग्रेशन फील होता है. जैसे कि अ जनरल फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ अराउजल और फीलिंग एक्टिवेटेड माइट ऑफन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एग्रेशन. देयर कुड बी सेवरल फैक्टर दैट कॉज अराउजल. फॉर एग्जांपल एज वी सीन अर्लियर, जैसे एग्रेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम अ सेंस ऑफ क्राउडिंग, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर ऑल्सो. सो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जो कहती है वो ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस कर रही है? अराउजल पे. कि कुछ ऐसा होता है कि जो हमारी बॉडी को अराउज कर देती है और बिकॉज ऑफ दैट अराउजल वी इट लीड टू द एग्रेशन. हम एग्रेसिव हो जाते हैं. सिचुएशन भी ऐसे होते हैं कि वी बिकम एग्रेसिव, आवर इमोशन, आवर फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म एक्टिवेटेड एंड द part of the brain which is responsible for the emotion, as we all know the emotions के लिए कौन सा part responsible है, which is the limbic system. तो वो पार्ट एक्टिवेट हो जाने की वजह से और हमारी बॉडी के अराउज हो जाने की वजह से वी शो द एग्रेशन. नेक्स्ट इज द कॉज ऑफ एग्रेशन इज द चाइल्ड रियरिंग. चाइल्ड रियरिंग, बच्चा किस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहा है या उसकी रियरिंग कैसी हो रही है, वो भी उसको एग्रेसिव बनाता है. The way an individual is brought up often influences his or her aggressiveness. For example, children whose parents use physical punishment end up becoming more aggressive than children whose parents use other disciplinary techniques. अगर मान लीजिए किसी बच्चे के पेरेंट उसको फिजिकल पनिशमेंट देते हैं उसको डिसिप्लिन में लाने के लिए, और तो वो बच्चा बड़ा होकर ज़्यादा एग्रेसिव बनेगा इन कंपैरिजन टू दी अदर चाइल्ड. दिस कुड बी बिकॉज द पेरेंट हैज सेट एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर विच द चाइल्ड इमिटेट. बच्चा इमिटेट कर लेता है क्योंकि पेरेंट्स वो एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे हैं. It could also be because physical punishment made the child angry and resentful. As the child grow up, he or she expresses this anger through aggressive behavior. फिर वो aggressive behavior में वो show करे.
तो चाइल्ड की रियरिंग भी रिस्पॉन्सिबल है एग्रेशन के लिए. नेक्स्ट इज द फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेशन ऑलवेज लीड टू एग्रेशन. ये आपने पढ़ा है, विच इज नोन एज frustration aggression hypothesis given by the Dollard and Miller. Dollard and Miller is the name of a psychologist. उन्होंने दिया भी है hypothesis frustration aggression. कि frustration lead to aggression. Frustration is one of the psychological stress जिसकी वजह से aggression होता है. क्योंकि frustration क्या है? It refers to the blocking of needs and motive. हमारे नीड्स और मोटिव्स को ये ब्लॉक करता है, फुलफिल नहीं कर पाता है. तो ऑब्वियसली बात है, जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल रही हैं, तो हमें कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होगा, और वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से हमें गुस्सा आएगा, एंगर हमारे अंदर आएगा, एंड दैट विल लीड टू एग्रेशन एंड सम टाइम मे बी वायलेंस. So aggression is an expression and consequence of frustration. That is an emotional state that arises when a person is prevented from reaching a goal or attaining an object that he or she wants. The person may be very close to the goal and yet does not attain it. It has been found that people in frustrated situations show more aggression than those who are not frustrated. People in frustrated situations show more aggression than those who are not frustrated. In one of the experiments conducted to examine the effect of frustration, children were prevented from getting some attractive toy that were visible through a screen. As a result, these children were found to be more destructive in play than those children who were allowed to access the toy. जब हम कोई गोल ऑब्जेक्ट नहीं अटेंड कर पाते हैं तो हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, एंड दैट फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू द एग्रेशन. उस फ्रस्ट्रेशन से क्या होता है? एग्रेशन होता है. अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम जॉन डॉलर्ड है, विच आई हैव टेकन दिस नेम, जॉन डॉलर्ड. ही इज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, और इन्होंने अपने कोलैबोरेटर के साथ एक हाइपोथेसिस बनाई थी, या थ्योरी बनाई थी, जिसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी. फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी बनाई थी जॉन डॉलर्ड ने. ये थ्योरी ये कहती है कि फ्रस्ट्रेशन लीड टू एग्रेशन. एज एक्सपेक्टेड, फ्रस्ट्रेटेड पर्सन डेमोन्स्ट्रेट मोर एग्रेशन देन नॉन फ्रस्ट्रेटेड पर्सन. ये इनकी थ्योरी ही थी कि फ्रस्ट्रेटेड पर्सन जो होते हैं वो ज़्यादा एग्रेशन शो करते हैं इन कंपैरिजन टू दी नॉन फ्रस्ट्रेटेड. जिसके लिए अभी मैंने जस्ट एक्सपेरिमेंट भी बताया कि कुछ बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया गया. उनको there were two group. One group को वो toys दिए जा रहे थे, they are playing with it, they have an access toward it, but on the other hand there were other group who do not who are unable to access those toys. They are just watching the toys from the far distance on the screen only, and it makes them frustrated because they are watching that other ones are getting, but they are not getting those things, so they feel frustrated, and that frustration may lead to the aggression. So such aggression often shown toward a weaker person who was unable to react to the aggression. It is a normal human tendency कि usually people show an aggression to the weaker person. अपने से कमज़ोर लोगों पे ही लोग एग्रेसिव होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि दे डू नॉट रिएक्ट, दे डू नॉट डू एनीथिंग. इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. Often it is observed that members of a majority group in society may be prejudiced against members of a minority group and may show aggressive behavior toward a minority group member, such as using abusive language or even physically assaulting the minority group member. This may be cause of displaced aggression arising out of frustration. ठीक है. सो
these are some of the main causes of aggression. Inborn tendency, physiological mechanism, child rearing, frustration. There were four important causes which are leading to the aggression. Okay, but apart from these causes, there are some of the situational factor also which are leading to the aggression. कुछ situational factor भी हैं जिनसे कि aggression होता है. So I hope children you understand the causes of aggression. So now apart from these, there are some situational factor also which are leading to the aggression. So basically in the today's video we have discussed about the aggression and violence. What are the type of aggression? What are the causes of aggression? Children, please keep it in mind and learn it. Now, what are the situational factors that are leading to the aggression? Learning, observing an aggressive model, anger-provoking action by other, availability of weapons of aggression, personality factor, cultural factor. So these are the 5 situational factors which are leading to the aggression. Situational factors. First, learning. Second, observing an aggressive model. Observing an aggressive model. So first one is learning, second is observing an aggressive model, third is anger-provoking action by other, anger-provoking action by others, anger-provoking action by others. Fourth is personality factor. Fifth is availability of weapons. अगर आसपास कहीं weapons रहते हैं तो उससे भी पर्सन में एग्रेसिव टेंडेंसी आती है. Availability of weapons, availability of weapons of aggression. तो ये सारे कुछ सिचुएशनल फैक्टर हैं. एंड लास्टली इज कल्चरल फैक्टर. सो बेसिकली देयर आर 6 फैक्टर्स चिल्ड्रन which are leading to the aggression. Learning, observing an aggressive model, anger-provoking action by other, personality factor, availability of weapons of aggression, cultural factor. तो मेन कॉजेज क्या होते हैं एग्रेशन की वो तो हमने पढ़ा. कुछ सिचुएशन भी होते हैं जैसे लर्निंग कर जाते हैं हम लोग, गलत चीज़ें सीख लेते हैं. ठीक है, एग्रेसिव मॉडल को देख के भी इमिटेट करना, उन्हीं की तरह करना. किसी ने कोई ऐसा एक्शन कर दिया जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, एंगर प्रोवोकिंग एक्शन. पर्सनालिटी फैक्टर, आप खुद भी उस तरीके के हैं, मीन्स योर पर्सनालिटी इज जस्ट लाइक एन एग्रेसिव पर्सनालिटी. ओके, impulsive, quickly lose control personality. Availability of weapons. Availability of weapons means if you are surrounded with the weapons also, so that may also create an ambience and the environment on you. Then the cultural factor, in the culture in which you are growing up and rearing up. So somewhere I had discussed with you, but the detail of this one and how we can reduce the aggression and violence we will discuss in the next video. So this is for all children. I hope you understand the concept properly.
Thank you so much for carefully listening to me and observing the video. Thank you, children.